when you enter, 1 second, please. Okay, sir. Okay. Sorry. So today we have dealt program B2, Production Oral. So today I will explain to you how to face these Production Oral. You know what? In your exam, you will get a fish. You will get a posture. Now, for example, you entered in your exam, okay, in your Production Oral, and your sorry, your theme is violence, violence télé, les écrans en accusation. This is your theme basically. Now, for example, Prabjot, in your oral portion, okay, production oral, d'accord, you will get a posture, you will get a fish, votre article, violence télé, les écrans en accusation. And Prabjot, it is not in your B2 oral, you will get only one, one liner, les écrans en accusation. No, you will get this thing also with this article, wherein you have to read these things. You will get, their point of view. You will get something, the author point of view. Is it clear to you? In your Prabjot, is it clear to you? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है. Prabjot, देखो, let me explain to you. Like for example, जब आप एग्जाम में एंटर करते हो ना, तो आपको मान लो एक टॉपिक दिया गया है, les écrans en accusation. ऐसा नहीं होगा कि आपको टॉपिक दे दिया और आपको उस पर बोलना है. नहीं, आपको ना पूरा, जैसे एक टॉपिक में 5-6 लाइंस लिखी होंगी उस पोस्टर में, जो आपको रीडिंग, जो आपको मिलेगा पर स्पीकिंग के लिए, उसको आपको रीड ऑन करना है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल अप्लाई योर आर्गुमेंट्स. क्लियर? ओके सर. नाउ ये जो हमने लिखा है, ये एग्जाम पैटर्न है. ये एग्जाम में ऐसे ही आएगा. एग्जाम में बेसिकली अगर आपको टॉपिक आ रहा है विलोन्स तेले les écrans en accusation, तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ कुछ 5, 6, 7, 8 लाइंस लिखेंगे कि एटलीस्ट यू विल रीड द ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू, कि ऑथर क्या कह रहा है, एंड देन यू विल ऐड ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. सबसे पहले हम इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे नवजोत? अभी मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, इट इज जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हम पढ़ेंगे बाद में. लेकिन फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू कि हाउ आई विल प्रेजेंट माय आर्टिकल. यू नो व्हाट, ये जो आर्टिकल है ना, सबसे पहले आपको क्या करना होता है प्रभजोत? इन योर B2 oral, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन योर B2 oral, you have to see it is written by whom, and it is now over here, the author of this article is Jean-Yves Labbé. Clear, Prabjot? Yes sir. The author of this article is Jean-Yves Labbé, and this article is published in Le Monde. अब Le Monde वहां पे एक न्यूज़पेपर है, Le Monde. It means this article cutting, ये जो कटिंग आपको मिली एक्सप्लेन करने के लिए, has been taken from the newspaper Monde. क्लियर हो रहा है? Yes sir. Monde is a newspaper. क्लियर हो रहा है आपको? Now what I was Prabjot? Yes. And yes the sir. publish date was 3rd of May, the Mille Trois, 2003. B2 में Prabjot, now you came, I will explain to you how you will present yourself. Is it clear to you? Yes sir. We already have discussed a lot of things, but abhi I'm going to explain to you how you will, add on, like how you start. What is the first key point wherein you can start your B2? सबसे पहले आप क्या बोलते हो प्रभजोत? कि this article has been published. हमें पहले प्लान बनाना होता है. मैं पहले इंग्लिश में समझाऊंगा, then I will explain in French. We have to make a plan. This is your production oral B2, right? Yes. This article has been published in the newspaper, and the name of the newspaper was the name blah blah blah, and the date of publication was blah blah blah, which is written by blah 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 writer. Okay, and
in this article, first you have to read the article ki writer kya keh raha hai. Now, for example, if the writer is saying the bad effects of the, spending a time in front of the screen, bad effects of the television. So you will say in this article, the writer has explained the bad effects of spending a time in front of the screen. Is it clear to you, Navjot? Yes, sir. Clear हो रहा है आपको? Yes, sir. Is it clear to you? Yes, sir. That's clear. 1 second, please be online. Okay, in this article, the writer has, you will say, the writer has explained the bad effects of spending a time in front of the screen, okay, where he has given the country comparison, because अगर आप country comparison इसमें, see, you will see कि author क्या कह रहा है. I'm just giving you my point of view. अगर उसमें कोई country comparison आया हुआ है, right? Then you will say in this article, the writer has explained the bad effects of spending a time in front of the screen, where he has given the country comparison in terms of bad effects on children. And according to me, how and what, and the best precaution we can take if the number are increasing, and then in terms of spending a time in front of the screen. ये कुछ आपको पहले अपना प्लान बनाना होता है नवजोत, सॉरी प्रभजोत, ऐसे नहीं हम कर सकते कि ठीक है जैसी टॉपिक आए we can, no. Then we have to create a problematic. I will explain to you how it works today. Then you will say, secondly, I will discuss the disadvantages like author has described. Thirdly, I will discuss the consequence which may lead to bad disease and health problem. As author described the change in the behavior of kids, for example, extreme anger, violence, right? So ये हमें पहले describe करनी है, हमें पहले plan बनाना है, plan, so that कि क्योंकि this is not your B1 pattern. In your B2 pattern, Prabjot, you have to make a plan. Is it clear to you, Navjot? Yes, sir. Yes, sir. We speak in French. Now, premièrement, Prabjot, premièrement, vous devez parler, vous devez créer le projet, le plan. C'est clair. Vous devez faire le projet. Now, premièrement, vous devez parler, présenter, vous devez exprimer. Par exemple, cet article, this article, cet article a été publié, has been published dans le journal, in the newspaper Le Monde. We have a newspaper, okay? We'll do a lot of practice so that you come to know Le Monde is a newspaper, okay? Dans le journal, yeah, s'appelle Le Monde. Is it clear to you? Et la date de publication, dont le nom et le nom. We can say qu'il s'appelle. Ok. Cet article a été publié dans le journal dont. Either I can say cet article a été publié dans le journal qui s'appelle Le Monde. Is it clear to you? Et yes, la date de publication, the date of the publication, été. Été, we have, you know, was word, été. Été. Yeah, in fact. 3 Mai 2003. Now, for example, we have the date of publication. It will be mentioned over there in your article, the date and everything will be mentioned over there. So you have to see. So you will say, cet article a été publié dans le journal qui s'appelle Le Monde et la date de publication était 3 mai, c'est clair, mai 2003, qui est écrit par, which is written by, qui est écrit par, it means which is written by blah 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 writer, whatever the name of the writer would be. Is it clear? This is your first plan which you have to present. Vous devez présenter premièrement ce type de plan. C'est clair? C'est clair? Yes, sir. Clear? Après ça, vous devez expliquer. Now, par exemple, vous devez lire toutes les choses dans votre article, dans votre intitulé, rubrique. C'est clair? Vous devez présenter. C'est votre plan. Premièrement, vous devez créer le plan, Prabjot. Dans cet article, in this article, l'écrivain, we have writer. L'écrivain a expliqué, has explained le mauvais effet de passer du temps. It means the bad effect of the passing the time, the passage du temps, because your article is l'écran.
le violence à télé. Is it clear to you? Il y a beaucoup des enfants, des jeunes qui consacrent, qui passent beaucoup de temps, énormément de temps devant l'écran. Et évidemment, ils créent beaucoup de choses. Malheureusement, ils créent beaucoup de choses qui est très mauvaises pour leur carrière, pour leur vie. C'est clair. Is it clear to you? Yes, sir. So, premièrement, vous devez créer le projet. You cannot speak like that. Then you will say, dans cet article, then you explain to the jury. Dans cet article, l'écrivain a expliqué les, because first you have to see l'écrivain, writer, what writer is saying on the topic. Then you will say, okay, in this article, a writer is saying blah, blah, blah things. So that your jury will come to know that you have read entire article and on the basis of this, you are explaining your project. It doesn't mean writer saying something else and you pick a topic something else. Is it clear to you? Yes, sir. Then you will say, dans cet article, l'écrivain a expliqué le mauvais effet de passer du temps devant l'écran où il a donné une comparaison de pays. Exactly. उस article में there was a comparison of the pays. अगर वो आप article, I will send it to you, whatever, because I have a very shortage of small, very less space over here in the whiteboard. So that for this reason, I cannot write this article, which I have pasted earlier, Abhi, right? So, but over here, Okay. I will send it to you on your WhatsApp, wherein the writer did a comparison of the countries. Like, you know, in India, we have blah, blah, blah percentage of infant they spend a time. In France, blah, blah percentage of infant they spend a time in front of the screen. Now, over here, dans cet article, l'écrivain a expliqué le mauvais effet de passer du temps devant l'écran ou where il a donné une comparaison de pays en termes de mauvais effets chez les enfants. It means where he has given the country comparison. Is it clear to you? In terms of bad effect in the children. Say Claire. Yes. Now, then you have to describe like what you will explain. What you will explain. This is project. You cannot start until and unless you not create your project. Say Claire. Then you will say, Yes. according to me, is it clear to you? Oui. Comment, how, et quelle meilleure précaution? It means, selon according to me, how, et quelle meilleure, and what best precaution nous pouvons prendre, we can take, si le nombre augmente. Now you say, now for example, now you came to know, writer said, a lot of country comparison, a lot of bad things, but what you will think? Then you will say, selon moi, according to me, comment, how, et quelle meilleure précaution, and what best precaution nous pouvons prendre, we can take, si, if le nombre augmente, if the number is increasing, pour passer du temps devant l'écran. C'est clair? Oui. Then you will say, deuxièmement, okay, I will write it down. Sorry. Excusez-moi. So, then you will describe deuxièmement, secondly, team ये use करना है. Je vais discuter des inconvénients comme l'auteur l'a décrit. What is that? You're saying deuxièmement, secondly, je vais discuter, I will discuss the disadvantages des obviously, évidemment, il y a des inconvénients, c'est clair, Prabjot. Oui, oui. Then vous devez expliquer, exprimer, montrer, souligner les choses. Deuxièmement, je vais discuter les inconvénients comme l'auteur l'a décrit. How author has described. L'a décrit, décrire. C'est la passé composé à décrit. C'est clair. Oui, clair. Now, Prabjot, you came to know comment vous présentez votre oral dans votre B2, niveau de B2. C'est clair. Oui. Now, troisièmement, thirdly, you will say, troisièmement, you can explain like that, premièrement, deuxièmement, because अभी आप क्या कर रहे हो नवप्रभजोत, अभी तो खाली आप अपना प्लान ही बता रहे हो कि आप क्या बोलोगे, क्लियर कि आप कैसे प्रेजेंट करोगे. Then you will say troisièmement, je discuterai des conséquences.
Premièrement, je vais discuter les blabla. Deuxièmement, je vais discuter les inconvénients, comme l'auteur l'a décrit. Et troisièmement, je discuterai des conséquences qui peuvent entraîner, that lead to. Have you done entraîner verb? Claire? Qui peuvent Oui, entraîner monsieur. de mauvaises maladies et des problèmes de santé. Exactement. What are you saying? You're saying troisièmement, thirdly, je discuterai, I will discuss the consequence which may lead, peuvent entraîner, qui peuvent, which may, qui peuvent entraîner, which may lead the mauvaises maladies, the bad diseases, et des problèmes de santé and the health problem. C'est clair. Yes. Then C'est you clair. can say, because I'm making plan. I'm trying to explain to you how you will present comment vous présentez votre document. C'est clair, Prabjot? Oui, monsieur. भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मैं ये टॉपिक जो मेरा जो प्लान है बहुत इंक्रीज स्ट्रेच कर रहा हूं. से लॉन्चे, व्हाट इज स्ट्रेच करना? से लॉन्चे, C'est longer. से क्लियर. Oui, c'est longer. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब प्रभजोत, तो मैं आपको पूरा स्ट्रेच कर रहा हूं और इसको आप छोटा भी कर सकते हो अपने फ्लो को. क्लियर? Oui. नाउ फॉर एग्जांपल, देन आई एम मेकिंग, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो मेरा टॉपिक है मैं बोल रहा हूं एज ऑथर डिस्क्राइब कॉम लॉथर आर देखरी द चेंज इन द, ये लिखा था उसमें जब मैंने वो ऑथर आर्टिकल पढ़ा ना, उसमें लिखा होता कि whenever just children spend a time, you know, in front of the screen, so their behavior may get changed and they become very hyper, very anger, they show their anger in front of parents because it may affect in the mind of the, maybe in the mind of the children. Take clear. So इसी मैंने ये डिस्क्राइब किया. फिर as author described comme l'auteur a décrit le changement de comportement, the change of the behavior chez les enfants. C'est clair? In the kid, par exemple, la colère extrême, it means extreme anger. Colère, violent, violent. Is it clear to you? Yes. Then I'm saying, donc, hence, on the basis of this, sur la base de cela, sur la base de cela, it means on the basis of that, this, je mettrai en évidence et évidemment j'exprimerai et évaluerai les mesures préventives. C'est clair, Navjot? Sorry, Prabjot. Yes, sir. What I'm saying, Prabjot, did you understand कि concept है क्या B2 का बच्चे? हाँ जी, sir. Donc, sur la base de cela, on the basis of this, je mettrai en évidence. It means je mettrai en évidence ki I will put in the evidence, I will highlight. Very important phrase. Je mettrai en évidence. Et évidemment and obviously, j'exprimerai et évaluerai. It means I will explain and will evaluate les mesures préventives. Répétez après moi. Donc, sur la base de cela, je mettrai en évidence. Sir, give me 5 Donc, Donc, sur la base de cela, je mettrai en évidence et évidemment, et j'exprimerai et évaluerai les mesures préventives. Hence, on the basis of this, I will highlight and obviously, I will express and evaluate preventive measures. Can you say like that? And yes, sir. Navjot Bache, this is a template. If you have a thing, you know, which is coming under disadvantages, you can explain these are templates. You know, like comment vous faire votre projet? C'est clair, Prabjot. Yes, sir. Yes. Then you will say, hence on the basis of this, I will highlight obviously blah blah blah. Then is मैं sorry, अभी आपको पूरा plan बता रहा हूँ. Then you will say, je discuterai ici, I will discuss here, de la relation, the relation du thème entre la télévision et le nourrisson. You know what is nourrisson? देखो क्या होता है नवजोत, sorry Prabjot, कि
B2 may we cannot go for a repetition of the vocabularies. Clear? We have used enfant, infant. Nourrisson is also your infant. Nourrisson. Is it clear to you? Yes, sir. So I'm saying, je discuterai ici de la relation de thème entre la télévision et le nourrisson et le risque. It means I will discuss here the relation of the term between television and infant and their risk. Télévision et enfant, quel risque? एक आपने हेडिंग दे दी टेलीविजन. ये अब आपका जब आपने पूरा प्लान दे दिया, ये आपका प्रॉब्लमेटिक है. Vous devez créer le problématique. Problématique is not your problem, c'est votre questionnaire. Is it clear to you? Now, Yes, sir. après avoir exprimé les projets, vous devez créer le problématique premièrement. नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे. ये रूल है B2 का. प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करना है. बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक बन सकती है, क्वेश्चनर बन सकते हैं इसमें. लॉट ऑफ क्वेश्चनर यू कैन मेक इट आउट. जैसे फॉर एग्जांपल सॉरी, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें आप बना सकते हो प्रभजोत. जैसे और उस क्वेश्चन के बेसिस पे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हो. जैसे कि मैंने क्वेश्चन बनाया ये, faut-il limiter le temps qu'un enfant passe devant écran? ये क्वेश्चन है ना. My question is, you can sorry, you can make a question. Yes. Dans votre épreuve de B2, d'accord, vous devez créer beaucoup de choses. Now, faut-il limiter le temps? Should we limit the time quand un enfant passe devant un écran? It means, should we limit the time a child spend in front of the screen? Is it clear to my first problematic? आपको एक ही बनाना होता है, but obviously because it means because you are, we are in the training session, so I will explain to you a lot of problematic. Okay. सर ऐसे लाइक मतलब ये कंपल्सरी तो नहीं होता कि स्टार्टिंग में बनाना है, लाइक किसी भी लाइन में बना सकते हैं, लाइक मिडिल में. स्टार्टिंग में बनेगा प्रॉब्लमेटिक. जैसे ही आपका प्लान खत्म होगा पहले प्रॉब्लमेटिक आएगा. जैसे ही आपने अपना प्लान खत्म किया कि द आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, क्लियर, रिटन बाय ब्ला 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 ब्ला, क्लियर. उसके बाद आपको प्रॉब्लमेटिक बनाना ही है, देन यू विल एक्सप्लेन, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे. क्लियर? ओके सर. देन यू कैन मेक, हम प्रैक्टिस करेंगे प्रभजोत, नो प्रॉब्लम. जब आप ऑफलाइन आओगे ना, विल डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस. क्लियर? यस. रिकमेंडेशन, वैसे ऑनलाइन भी सही चल रहा है, बट दैट्स योर विश. आई एम नॉट सेइंग कि है ना, दैट्स योर विश. Recommandation pour les enfants, recommendation for the children, the 15 ans, the 5 years, et moins recommandation and under recommendation pour les enfants, for the children, the plus the 15 ans, which is more than 5 years. Is it clear to you? Effet des écrans, effect of the screen, effet des écrans sur le développement, effects of the screen on the children development. C'est clair? Des enfants utiliser les écrans using the screen pour calmer un enfant, to calm a child. Up question in one idée, using a screen to calm a child is a good idea? No, 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 no. C'est clair? A tout petit के तो बहुत ही small, toddler, we can say in English, toddler. A tout petit, 1 year का बच्चा, toddler, 2 year, a tout petit. Peut-il être dépendant aux écrans? He is also addicted to screen. Peut-il être dépendant? It means he is also addicted to screen. C'est clair? Oui. Les bons côtés des écrans, the best side of the screen. Les écrans ont-ils leur place à la garderie? À retenir. रत्नी, चलो हम इसको हटा देते हैं, तो वैसे ही है, इसको मैं हटा देता हूँ. What is that? Les écrans ont-ils leur place à la garderie? It means saying, is there a place for screen at daycare?
Is there a place for screen at daycare? Gardery. Garderies, daycare. Yes. Clear? So Yes. we can make a number of problems. Now, Prabjot, you came to know how we can start the sujet, clear, and how to make a problem. Obviously, we'll do a lot of exercises, we'll do a lot of articles. Now, how to present your sujet now. Clear? Now, from Yahmo, अब आपको this say more point of view. Say clear? So you will use to d'abord, use करेंगे हम to d'abord, okay? Premièrement, सबसे पहले हम, क्योंकि जो मैं टॉपिक रीड किया था उसमें les écrans et les enfants के बारे में रिलेशन है. क्लियर? मैं आपको टॉपिक भेजूंगा, you can make your own point of view, but I'm giving my point of view. Is it clear to you? Yes, sir. मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन बनाया, प्रभजोत, मान लो मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया, faut-il limiter le temps qu'un enfant passe devant un écran? It means, is there a time limit that children passing a time in front of the television? अब वहां पे ना कंट्री कंपैरिजन दिया हुआ था, मैंने जब उसको पढ़ा टॉपिक को. क्लियर? तो ठीक है, मैं एक वैसे आपसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ. क्लियर? क्लियर? So you can use a number of règles. The notion on peut observer que c'est clair. D'accord? We can say il faut insister sur le fait que il vient d'après dans les médias français. C'est un problème qui fait les choses mauvaises. It's a problem ça tient en tête de liste. We can use a lot of phrases. Tell me. Oh, yes, sir. We can. Clear? मैं अपने सा I can use lot of things over here. देखो ये एक मैं फिर आप अपनी वे से बता सकते हो ना. Pour bien se développer, अतुपति. Now what is that? देखो रूल्स आपके पास है नवजोत बोलने के लिए, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू एड ऑन कर रहा हूं अपार्ट फ्रॉम दीज टेम्पलेट्स. क्लियर? d'accord? See, we have a point for the notion on peut observer que il y a des enfants qui passent toujours le temps devant l'écran, ils créent les choses très mauvaises et il faut insister sur le fait que l'habitude de passer de temps avec l'écran, avec la télévision, il crée les choses malheur. C'est clair? Malheureusement, unfortunately, you can say anything. Clair? C'est un grand problème. Ce problème se tient en tête de liste. Ce problème est devenu mal en pire dans les années récentes. Can I say these templates? Tell me. Navjot, you have this template, Prabjot, right? Yes, yes, we have. But apart from this template, I'm giving you my point of view. So you can use the number of templates you have, right? Clear, yes. Prabjot? Yes, sir. And then you will describe your point of view. I will give some time wherein you will understand me, then you will describe your point of view. I can say Navjot, pour bien se développer, to develop well. To develop well, pour bien se développer. To develop well, atupati, a toddler. Atupati क्या होता है Prabjot? We use for 1 year, 2 year baby. Atupati a besoin d'avoir des contacts avec les autres et de faire toutes sortes d'activités. What is that? To develop well, atupati, a toddler, need to have contact with others. Besoin d'avoir. You know, besoin is a verb to need. D'avoir, to have. Des contacts avec les autres, with the other, et de faire toutes sortes d'activités, and do all kind of activities. Par exemple, casse-tête. Casse-tête क्या होता है? Puzzles. Casse-tête. Casse-tête, what is that? Puzzles, right? Path à modeler. Path à modeler होता है played off. Okay, is it clear to you? Then we have bricolage. Bricolage, we have craft making. Well, we can do a lot of things. I'm just giving my, vocabularies. You can note it down. Bricolage, craft. Clear? Now we have chulbut. Chulbut, we have tumbles. Okay. Lancer a ballon, to throwing a ball. You know, ball ke sath khela, lancer un ballon. Regarder des livres.
it means looking at the books. C'est clair. Il y a beaucoup des activités. The year I'm using for a connector. Moreover, use करना है the year. Connectors आपको use, vous devez utiliser le connecteur dans votre production orale. C'est clair. Oui. Si par exemple, Prabjot, vous voulez gagner la bonne note, vous voulez réussir à votre examen dans votre production orale avec la bonne note, vous devez utiliser le connecteur. Il est très, très, très important. C'est clair. Oui. Maintenant, utilisez les phrases. D'ailleurs, les interactions qu'un enfant a avec son environnement et son entourage sont la meilleure source de stimulation pour lui. What is that? I'm saying d'ailleurs, moreover, les interactions, the interaction qu'un enfant, a child, avec son environnement, with his environment, et son entourage and his surroundings, sont la meilleure source de stimulation, the best source of stimulation for him. Exactly. The interaction of child with his environment and these around is the best source of stimulation. C'est clair? Oui. C'est clair? Yes. En plus, moreover, en plus, un enfant passe temps devant un écran durant une journée. It means the more a child spends a long time or long hours. The more time a child spends in front of the screen during a day, un enfant passe du temps devant un écran durant une journée. C'est clair? Oui. Moi, il lui en reste pour jouer. It means the less. Moi, the less. Il lui en reste. He has left to play, pour jouer et parler. It means the less he left to play and to talk avec les autres. Pour cette raison, les écrans, for the reason the screen, ne devraient pas prendre trop de place dans sa vie. For this reason, screen should not take up too much space in its life. समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. So repeat please. Repeat करो आप. Oui. Pour bien, शुरू से करो सर सारा. Yes, yes. Les écrans et les enfants, faut-il limiter le temps qu'un enfant passe devant un écran? Pour bien se développer, un tout petit a besoin d'avoir des contacts avec les autres et de faire toutes sortes d'activités. Exemple, casse-tête, pâte à modèle, bricolage. L'interaction qu'un enfant a avec son environnement et son entourage sont la meilleure source de stimulation pour lui. Or, plus un enfant passe du temps devant un écran durant une journée, moins il lui en reste pour jouer et parler avec les autres. Pour cette raison, les écrans ne devraient pas prendre trop de place dans sa vie. Exactement. Claire? See, from Yahoo, from Short, vous devez créer le projet. Après ça, problématique. Et après ça, vous devez créer l'intitulé. Rubric, you have to create the heading. Is it clear to you? Then you Yes, can sir. do a lot of things, but I'm giving you my point of view so that you will come to know vocabularies. Clear? I can say, don't la mem. See, in every line I'm using connectors. The year, pourtant, en plus, dans la même. De la même manière is likewise. You utilisez le connecteur. Pen down, notez le connecteur dans votre papier. C'est clair. Et pratiquez le connecteur. C'est clair. Yes. De la même manière, likewise, une grande utilisation des écrans réduit sur le temps accordé aux activités physiques est au jeu libre. What is that? Est au jeu libre. Likewise, grande utilisation des écrans, it means measure more usage of the screen. Okay, often reduce the amount of time spent on physical activities and free play. Oui.
Une grande utilisation des écrans réduit souvent le temps accordé aux activités physiques et aux jeux libres, c'est clair. Oui. Now, plusieurs études, several studies on the year établit un lien entre la sédentarité. Répétez après moi. I will explain to you very important vocabulary. Sédentarité causée par l'utilisation des écrans et le surpoids chez les enfants. Non, répétez s'il vous plaît. शुरू से. De la même manière, une grande utilisation de l'écran réduit souvent le temps accordé aux activités physiques et aux jeux libres. Plusieurs études ont d'ailleurs établi un lien entre la sédentarité Sédentarité. Sédentarité is what? You know, stagnant. When you're doing the, what I would say, IELTS, we use the vocab of stagnant, motionless, dead. गतिहीन कहते हैं उसको हम. Yes, sir. Okay, stagnant. क्यों एक जगह बस थम गया है. That is sédentarité. Vocab use करना है ये. In B2, I will give a lot of vocabularies. Now, what is that? I'm saying, let's repeat. Dans la même manière, likewise, une grande utilisation des écrans réduit souvent le temps accordé aux activités physiques et aux jeux libres. C'est clair? Clair? Oui. Plusieurs études ont d'ailleurs établi un lien. It means several studies have established a link between a sedentary lifestyle caused by l'utilisation des écrans. Now, for example, people are just sitting in front of the screen, so the life will get stopped. There's no movement outside. C'est clair. D'accord? For this season, pour cette raison, on utilise le vocabulaire sédentarité, stagnant, stop. C'est clair. Yes. Sédentarité causée par l'utilisation des écrans caused by the use of screen et le surpoids. Surpoids, we have overweight. For this reason, the children are overweight. They are not doing any physical activities. C'est clair. Poids is weight. Surpoids chez les enfants. Overweight in children. C'est clair. Again, Yes, Prabjot, you are looking in every line. I'm using connectors, which is a part of your B2. The plus. In addition, the plus, le manque d'activité, the lack of physical activity, le manque d'activité physique et la sédentarité and sedentary lifestyle. जब आपकी लाइफ रुक से जाती रहेगी, sédentarité in French. Now you came to know new vocabulary, sédentarité. Claire, Prabjot, to use this vocab. Pour également nuire is harmful. C'est clair. Yes, sir. Au développement d'habileté, c'est clair, motrice indispensable au développement global de l'enfant. Par exemple, marcher, courir, lancer, sauter, ramper, etc. What is that? I'm saying over here, where we were, sédentarité. Causé par l'utilisation, caused by the l'utilisation des écrans, caused by the use of screen, et le surpoids chez les enfants and overweight in children. The plus, moreover, in addition, le manque d'activité physique, the lack of physical activity, et la sédentarité and sedentary lifestyle could également nuire, could also interfere with the development of motor skills. Nuire. C'est-à-dire quoi? Nuire. Repeat after me. Nuire. Nuire. It's a very important vocab. Is it clear to you? Which Yes, is sir. harmful. Now I will give you, because over here we are doing B2 pattern of Prabjot, so use the vocabularies nuire. Endommager, dommage, c'est quel dommage? Endommager, faire du mal, faire du tort, détériorer, very important, souiller.
Is it clear to you? Deteriorate, which is deteriorate. Yes, sir. So use, utiliser le vocabulaire. Now ici vous êtes dans votre épreuve, vous devez réussir dans votre examen de DAL C1, mais je ne sais pas exactement si vous voulez, c'est votre l'avenir, c'est pour votre l'avenir. Si vous voulez réussir dans votre examen de DAL C1, dans cet examen, vous devez prêter maintenant et vous devez ajouter le vocabulaire, les synonymes, c'est clair. Oui, sir. Endommager, faire du mal, faire du tort, détériorer, souiller. Is it clear to you, Navjot? Prabjot, sorry. Yes, sir. Clear? Clear. Oui. Clear? Now I will give you again a lot of vocabularies for damage and use. Whenever you have a topic for, for disadvantages, you can use this. Endommager, nuire, détériorer, entraver, forcer, esquinte. Is it clear to you? These are the vocab, because whenever you will do reading portion on that case, obviously maybe you will get these vocabularies, but keep this vocab in your mind. Prabjot, nuire, répétez après moi, nuire, Nuire, endommager, endommager, faire du mal, faire du mal, faire du tort, faire du tort, détériorer, détériorer, souiller, souiller. Sir, souiller क्या था? harm, damage. Clear? Is it clear to you? Clear? Yes, sir. Okay. Okay. Now we have endommager, Endommager, nuire, nuire, détériorer, détériorer, entraver, entraver, forcer, fausser, esquinter. esquinter. Is it clear to you? Yes, sir. Sir, ये entraver, fausser और esquinter सब same कुछ, meaning है yes, इनका? exactement, exact. Clear, Prabjot? Yes, sir. He's saying the plus, I'm using again the vocabulary. The plus, le manque d'activité physique, the less missing of the active physique et sédentarité pourra également nuire. It could equally damage the development of the ability. Is it clear to you? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Motrice indispensable, the skills essential, indispensable, essential au développement global de l'enfant, the child overall development. Example, marcher walking, courir running, lancer throwing, sauter jump, ramper crawling, etc. C'est clair. Chez les enfants, in the children, une très grande exposition, a very high exposure aux écrans au bas âge, exact en bas âge. It means chez les enfants, in the infants, une très grande exposition aux écrans en bas âge. What is that? Very young age. En bas is lower. En bas âge serait ainsi associé. Young age is there with associated with blah blah, whatever you want to write it down. C'est clair. So, Prabjot, here I'm giving you my point of view and the vocabularies. Is it clear to you? So can you start Yes, now, Prabjot, from the starting? Can you start now, Joe? Yes, sir. शुरू से? Yes, sure. Say. Oui, okay. De la même manière, une grande utilisation de l'écran réduit souvent le temps accordé aux activités physiques et aux jeux libres. Plusieurs études ont d'ailleurs établi un lien entre la sédentarité
causée par la utilisation des écrans et le surpoids chez les enfants. De plus, le manque d'activité physique et la sédentarité pourraient également nuire au développement d'habilités motriques indispensables au développement global de l'enfant. Exemple, marcher, courir, lancer, sauter, ramper, etc. Chez les enfants, une très grande exposition au écran en basse âge sera ainsi associée à Clear? keywords. Now, for example, see, we are doing the practice session. So in practice session, I will explain to you a lot of things, a lot of vocabularies, and you can, you know, add on the template which I have given to you, right? Yes. Now, if I ask to you, Prabjot, Mm. sorry, Prabjot. Now, if I ask to you, for example, est-ce que jouer sur un ordinateur ou une tablette est nécessaire au développement? I'm just asking to you. Now, what do you think? Because Navjot, sorry, Prabjot, your jury will ask a question after the end of your article, of your theme in your B2. Because you know what? Listen to me very carefully, Prabjot. I'm giving you my point of view. See, or I'm telling you the story of B2, right? Now, you see, for example, ask. Now, par exemple, votre jury peut-être poser la question, ask the question, est-ce que jouer sur un ordinateur ou une tablette est nécessaire au développement? Is playing on a computer, on a tablet necessary for the development? Mais je ne sais pas, jury can ask a question. If I am your jury, I ask raise a question. Est-ce que jouer sur un ordinateur ou une tablette est nécessaire au développement? See, this is my point of view, which I'm going to explain to you. And you have to add on your point of view. C'est clair? Now, certains parents croient qu'ils doivent laisser surtout petit s'amuser sur un ordinateur ou sur une tablette pour éviter qu'ils soient en retard sur les autres. C'est clair? Oui. D'accord? Now, maintenant, ici, par exemple, बच्चे अपना ना आपका वीडियो आ रहा है, मेरे को रिकॉर्डिंग में डालना है, अपना वीडियो बंद कर लो. Sorry. No problem. Okay. Now, okay, let me repeat one more time. See, I raise a question. I asked a question to you. Ask, jouer sur ordinateur. Probably I'm asking a question to you. For example, see, je vous pose la question ici. Mademoiselle, quoi vous pensez ici? Est-ce que jouer sur ordinateur ou une tablette est nécessaire au développement? I can say, certains parents croient qu'ils doivent laisser leur tout petit s'amuser. Some parents believe that they should let their toddler have fun on a computer. C'est clair, laisser. C'est clair? Let their toddler have fun on computer or tablet ou sur une tablette pour éviter, to avoid qu'il soit en retard, to avoid falling behind sur les autres à l'école, others in the school. Mais ce n'est pas ça. But that doesn't the case. The tout le cas. Mais ce n'est pas. Mais ce n'est pas de tout le cas. But this is not that in all the cases. En effet, connectors indeed of. En effet, connectors. En effet, indeed of. L'utilisation des technologies numériques en bas âge
it means but the usage of digital technologies, l'utilisation de technology numérique, numérique we have digital, smart, the utilization of the technologies digital en bas âge, in a very early age, na amelior, it means na amelior, ameliore we have verb to, you know, improve. I'm saying bas âge na melhor par le développement de l'enfant et ne lui donne pas un avantage à l'école plus tard. What I'm saying. So this is my point of view. Prabjot, you can give me your point of view and you have to explain, practice for this. On a fait l'utilisation des technologies numériques en bas âge n'améliore pas le développement de l'enfant et ne lui donne pas un avantage à l'école plus tard. Is it clear to you? It means the technology in very early doesn't improve the child development and does not give him a advantage in the school later on. Clear? Is it clear to you? यस सर इसमें लाइक ऐसे भी होता है जैसे माइल्स में होता है कि जैसे ये फॉलो अप टाइप होता है ना, लाइक उसके बाद तो हम उसमें एग्जांपल ऐड कर सकते हैं जो ये वाला उसके बाद जो क्वेश्चन पूछते हैं हमसे। हाँ हाँ, क्वेश्चन में तो यूजुअली आपसे क्वेश्चन पूछेगी क्योंकि जब आप बोलोगे ना, सी लेट मी एक्सप्लेन टू यू, व्हेन यू एक्सप्लेन योर थीम, सो जूरी कहेगी ऐसा क्यों, सो यू हैव टू एक्सप्लेन देयर क्वेश्चंस। सी क्लियर? ठीक है नवजोत, प्रभजोत एक काम करोगे बच्चे आप, व्हाट यू हैव टू डू इज entire section under recording and I think you already have taken the screenshot of this screen. Claire, d'accord? यस So Prabjot bache, I'm giving you the task now. You have to watch those session. You want this recording? यस सर So okay, I will share the recording. So you have to watch those session, very important for B2 oral, okay? And you have to prepare your point of view and then we can discuss tomorrow. Clear? ओके सर सर ऑन दिस टॉपिक ओनली आपको हाँ इसी टॉपिक बनाना है and you have to express your point of view, then I will ask a question to you. Let's see how it works. Clear बच्चे? ओके सर ठीक है? Clear? Yes, sir. It will help you in C1 also. जितना मुझे arguments करोगे, it will help you in C1 program. Clear? ओके सर ठीक है बच्चे? हाँ जी सर रिकॉर्डिंग भेज देना ये वाली, क्या बच्चे? सर रिकॉर्डिंग भेज देना ये वाली। Recording I will share. You have to revise. You have to repeat the recording 5 to 6 times daily. Clear? ओके सर All right.